A very good evening to one and all. I take great pleasure in welcoming you all to the first online annual day celebrations of Leo High School for the academic year 2021-22 being held today. This event is indeed a very prestigious event for our school, and I'm sure each one of you must be anxiously in wait for the event to commence and witness our young students take on the stage and mesmerize you with the dazzling performances. At the outset, we begin our program with the invocation to Lord Ganesha, reciting the Ganesh Vandana. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. We now present to you a welcome song sung by the students of Leo High School, Athaswagatam. स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नित्यप्रियं भारत भारतं नित्यप्रियं भारत भारतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य निरन्तर दानवता मानवता समता ममता नित्य निरन्तर दानवता मानवता समता ममता सारथी साध्य मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथी साध्य मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमत संकल्प अभिजित अभिमत आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्यप्रियं भारत भारतं नित्यप्रियं भारत भारतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मात क्रीड़ांगन में प्रबुदित बंधु भावनाएं मैत्री मात क्रीड़ांगन में प्रबुदित बंधु भावनाएं शाश्वत सुविकसित इति शुभम् शाश्वत सुविकसित इति शुभम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित्यप्रियं भारत भारतं नित्यप्रियं भारत भारतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्. Thank you. Thank you, students. Saraswati is the goddess of knowledge and arts and represents the free flow of wisdom. She has 4 hands
representing the four aspects of human personality in learning, mind intellect, alertness and ego. We will now recite the Saraswati Vandana. We now present the school anthem sung by one of our students of grade 5. We are Leo High School. We will march ahead. We are Leo High School, we will march ahead. We are Leo High School, we will march ahead. From the darkness to the light we go, enriching body, mind and soul. Winds of change will make us grow. Our school is blessed and we are. We are Leo High School, we will march ahead. We are Leo High School, we will march ahead. We will get knowledge and the might, with grace and order that is right, rooted in our culture life, keeping country innocent sight. We are Leo High School, we will march ahead. We are Leo High School, we will march ahead. I would wish to invite our Honorable Principal of Leo High School, Mrs. Kulwant Kaur, to deliver the annual report of our school. Over to you, Kulwant ma'am. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय प्रबंधक महोदय, सहयोगी शिक्षक गण, सम्मानित अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय छात्रों, शुभ संध्या। विद्यालय के वार्षिक महोत्सव पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही साथ इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि आज आप सभी के सामने विद्यालय के विगत सत्र 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट को भी प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं इस विद्यालय से जुड़े समस्त सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस संस्था के लिए अपनी सेवाएं दी, जिसके कारण आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमने इस वर्ष के वार्षिकोत्सव के लिए हो अर्थात आशा को थीम बनाया है। इस थीम को हमने अपने हर कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया है। जीवन में दुख, सुख और कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु आशा ही वह हिम्मत है जो मनुष्य को नए दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव रखी जाती है। शिक्षा जीवन का सार सिखाती है और जीवन की कठिनाइयों में सबको राह दिखाती है। इसलिए तो कोरोना महामारी से लड़ना और जीतना सभी के लिए आसान हुआ। कोरोना महामारी के कारण सारा देश थम सा गया था, किंतु जीवनोपयोगी वस्तुओं को रोका न जा सका। उन्हें किसी न किसी माध्यम द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम समाज के हर वर्ग ने किया।
और उसी वर्ग में स्कूलों को भी गिना गया। बच्चों को निरंतर शिक्षा मिलती रहे तथा स्कूली वातावरण बनाए रखने के लिए हमने ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ किया और इन कक्षाओं में व्याख्यानों के साथ साथ प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया। हमने पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक दोनों वर्गों के लिए एक समान कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूर्व प्राथमिक छात्रों को रंगों की सही पहचान हो सके, इसके लिए हर महीने रंग दिवस कलर डे मनाया जाता, जिसमें बच्चों से उसी रंग के कपड़े पहनने कहे जाते और साथ ही उसी रंग के प्रकल्प भी बनवाए जाते। गोकुल अष्टमी और राखी के त्योहारों की जानकारी देने के लिए मुकुट और राखियाँ ऑनलाइन माध्यम से बच्चों से बनवाई गई। चित्रकला में रुचि को बनाए रखने के लिए चित्र बनवाना और अंगूठे की छाप का उपयोग कर चित्र को सुंदर बनाने को सिखाया गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय राष्ट्रीय ध्वज बच्चों से बनवाए गए। प्राथमिक छात्रों को लेखन और वाचन का अभ्यास देने हेतु उनकी वाचन क्षमता को दृढ़ करने तथा लेखन में सुधार हेतु हमने लेखन वाचन प्रतियोगिताएं रखी। साथ ही चित्रकला और राखी बनवाने की भी प्रतियोगिताएं रखी। बच्चों को समय समय पर तरह तरह के प्रकल्प बनाने दिए जाते, जिससे उनकी सोचने की क्षमता में पूर्णता आ सके और वे कुछ नया संशोधन कर सके, क्योंकि कोई जन्म से ही वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि उसे वैज्ञानिक बनने के लिए सिखाया जाता है। वेशभूषा प्रतियोगिता और के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले बनने का अवसर भी हमने लड़कियों को दिया तथा उनसे भाषण देने का कार्यक्रम रखा गया, जिससे उन्हें स्त्रियों की स्थिति समझ आ सके। स्वतंत्रता दिवस और पारसी दिवस त्योहारों की जानकारी पावर पॉइंट के माध्यम से बच्चों को दी गई। श्रावण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, गोपाल काला और गोकुल अष्टमी त्योहारों की महत्ता बताई। गणपति जी की महाआरती को लाइव यानी कि साक्षात दिखाने का प्रयास भी हमने किया। इन सभी कार्यक्रमों के बावजूद हमने कभी भी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की। समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन परीक्षाओं के द्वारा लिया गया और आवश्यक वहाँ मार्गदर्शन भी दिया गया। साथ ही समय समय पर पालकों के साथ भी बैठकें मीटिंगें ली गई। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ हमने स्कूलों को ऑफलाइन मोड में शुरू किया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए और होली जैसे त्यौहार को स्कूल के परिसर में ही खेलने का मौका बच्चों को मिला, जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। सालाना वार्षिक परीक्षा के साथ साथ सालाना वार्षिक महोत्सव एनुअल डे की तैयारी भी बच्चों से करवाई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा विद्यालय उत्कृष्टता की नई सीढ़ी ऊंचाइयों को प्रतिवर्ष छू रहा है। इसमें आप सभी का सहयोग सम्मिलित है। यदि इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहा तो हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I would now wish to invite our Honorable Director of our school, Mr. Ashwin Mahagaonkar, to introduce the theme of hope, Asha, to all of us. Over to you, Ashwin sir. Greetings from Leo High School, dear students and parents. As we all know, it is after a long time and after facing difficult challenges presented by this pandemic that we all are finally back to the school with a proper routine. We all remember that how the entire human race went through many difficulties during this pandemic. People went through health related difficulties, economic issues, mental traumas, social stigmas during these times. But still, here we are, clinging to our life and slowly but steadily
getting things back in the order. We all value our life. Until we exist, we all would want to live it in a fulfilling way. It is this feeling of holding on to life, never giving up, and going ahead with a positive attitude has kept us alive and thriving after this pandemic. And it is on this positive note that I declare hope as the theme for our annual function. I remember a quote from a movie called Shawshank Redemption. The quote goes as, "Hope is a good thing, maybe best of things, and no good thing ever dies." It is hope that has kept us alive. It is hope that has given us the strength to face this all, and it is hope that is going to guarantee us a better tomorrow. It is with this positive outlook I end my few words and declare the event open for further presentations. Jai Hind, Jai Maharashtra. We now begin the annual program with the theme of hope, Asha. Life is so unpredictable, and whatever happens at any given time has to be faced by us as it comes, as we are not able to foresee them well in advance. Thus, hope is the only element which keeps our spirits very high and gives us a direction when we run low in spirit, and often we feel dejected when things do not go our way. We start our annual function with a telephonic conversation between a father and the son at the outset. The father is generally out for a business trip to Bangalore, and the son is based in Mumbai pursuing his studies. Hello son, how are you doing? I am fine and doing well. How about you? I am doing well to my son. That's very nice, Dad. I will be coming to Mumbai for a couple of days. We will meet and plan an outing together. That's fantastic, Dad. See you soon in Mumbai. Waiting for you to come home, Dad. Bye, see you soon. Take care, my son. Thanks, Dad. Wow, welcome, Dad. So I am back home, my son. Yes, Dad, that's wonderful. How did you spend your day, son? Well, days I had good times at school with my friends, went swimming, enjoyed at mall, and weekend and play a lot of game with my friends. How did you spend your time, Dad? Well, I went over to Bangalore on my business trip. I met a lot my business partner and enjoyed the evening and lot my son. Dad, why don't we plan an outing this Sunday? Tell me where you wish to go, son. We are having our third annual meet in school this Sunday. I would like you to come for annual day function. Will you come, Dad? Oh, for sure. We will go together by car. Later we have dinner at good restaurant. It is fine, son. That's fantastic, Dad. It will be great. Let's go, son. We now present a song and dance by the pre-primary students of our school.
के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद था आओगे दिन खुशी चल बनाए आशिया చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले Gama pasa, bam bam bam, bam 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 bole, bam chika bole, और मस्ती में डोले, bam bam bole, मस्ती में डोले, bam bam bole, मस्ती में तू डोल रे, bam bam bole, मस्ती में डोले, bam bam bole, मस्ती में तू डोल रे. और रट रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. We continue with the conversation between the father and the son. How was the program, Dad? Fantastic. This is just awesome. Thanks, Dad. My school is best in all activities, Dad. Yes, my son. Wow, what a lovely food, Dad. Yes, my son. I had specially booked 2 seats for both of us in Hotel Kandil. Yes, Dad. There is an announcement of a total lockdown all over the country. And this news shocks most of us Indians, for we are taken unawares. Let us see what happens in this conversation with the father and the child. आजच्या ठळक बातम्या. आज रात्री 12 वाजल्यापासून संपूर्ण भारत देश बंद जाहीर करण्यात आले आहे. दुकाने बंद, शाळा बंद, मॉल बंद, मैदान बंद, सिनेमा हॉल बंद, हॉटेल बंद आणि रेल्वे सुद्धा बंद. फक्त जरुरी साधनांची दुकाने, हॉस्पिटल, दवाखाना इत्यादी उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. Do you hear the news?
Yes, my son, a total lockdown has been declared. Let's go, son. The child finds the lockdown quite interesting initially. For the first few days, the child is happy, for he has no school to go to. He has to go nowhere to play except at home. That makes him feel excited. But then, after the passing of a few days, the child feels dejected. The child feels cross with himself. He is angry and he expresses his view. Let us hear the conversation between the son and the father about this particular aspect that the child feels. Dad, why I am not able to go to school and to play and meet my friends? The total lockdown has been declared throughout the nation due to the pandemic. Oh, it's so unfair, Dad. Why am I punished without any fault of mine? I agree to what you are saying, but we are helpless and don't have another choice. We now present to you a song and dance on the number Khel Mandala. सड़कें है अब लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहां खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मां। देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराच नाही, सांगा कुठं ठेवू माथा कळनाच काही। देवा कुठं शोधू तुला मला सांगना, प्रेम केलं एवढाच माझा रे गुन्हा। देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी, देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी, माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी। आर पार काळजात का दिलास घाव तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू। का रे तडफड ही ह्या काळजामधी, घुसमट तुझी रे होते का कधी। मानसाचा तू जन्म घे, गाव जो मांडला मोडू दे। का हात सुटले, श्वास मिटले, ठेच लागे, उत्तराला प्रश्न कसे हे पडले, अंतराचे अंतर कसे ना कळले। देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी, माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी। आर पार काळजात का दिलास घाव तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू। तुझ्या पायरीशी कुणी सान थोर नाही, साध सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई।
तरी देवा सरनायो भोग कशा पायी हरवली वाट दिशा अंधारल्या नाही वाळून उधळतो जीव माय बापा वनवायो उरी पेटला खेळ मांडला खेळ मांडला खेळ मांडला देवा खेळ मांडला सांडली गाडीत भात घेतला बसा तुझा तूच वाट दाखी बघा खेळ मांडला डावी देवा बैल पार पाठीशी तुरा उभा यो तुझ्याच उंबऱ्यात खेळ मांडला अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं। उसवल गण घोट सार आधार कुणाचा नाही भेगाळल्या भुई परिजीन अंगार जीवाला जाळी बळगे झुंजाया कीर्तीची ढाल दे नवी पंच प्राण जीवारत ताल दे कर पलरान देवाचल शिवार तरी नाही धीर सांडला खेळ मांडला We now have a dance number for you, presented by the students of Leo High School. Mitti Mein Mil Jao. तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है
मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मम्मा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। घड़ी है देखो सबसे बड़ी हम उसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बटे गाड़ दूंगा। We find that the conversation with the father and son goes on, and the child is very irritated, goes again and again to his parents and asks him why this is so. The father is not able to answer him to the fullest and only replies that it is the lockdown which has closed all the doors for the child to move out and enjoy what he was doing earlier. But the father tells the child about a wonderful story, the story of the 4 candles. Let us see what happens then. Father, when will things be normal? Let's hope, son. Then the least we can do. But I feel dejected and angry, Dad. Don't lose hope, my son. I remember a wonderful story. The story of 4 candles. Once upon a time, there were 4 candles. The candle of love, the candle of faith, the candle of hope, and the candle of peace. They were burning brightly in a room.
Let me see for myself, Dad. Yes, my son. The child tells the father that he is going to the room to see the candles for himself and whether they will give him the support that is required by him at this point of crisis. The son goes into the room and finds all the 4 candles burning brightly. The son returns back to his father and feels so elated and happy and relieved that he has taken a promise from the candles that they will always be with him. All the 4 candles are burning brightly. Will you be with me till the end of the story? Promise me. Yes, we will be with you, son, till the end. Promise me. And now I feel very relieved and safe. That all the 4 candles are burning brightly. They promise me they will be with me till the end of the story. It is so nice. Now we have the 4 candles that express their thoughts of what they feel during the pandemic. And out of these 4, 3 of the candles express their desire to extinguish themselves. Let us see what happens then. I am the candle of love, and I fill the hearts of everyone with love. But oh, how sad it is. People have forgotten love. They put me aside and don't understand my importance. They even forget to love those who are nearest and dearest to them. The pandemic has made them forget their love for others. So I don't want to stay here any longer, and I wish to go away. I am the candle of faith, and people have faith in me. But nowadays, people have lost their faith, and they don't believe anyone, including me, and they don't keep me lit longer, so I will go away. The pandemic has destroyed the peace of each and everyone throughout the globe. All seem to be depressed, angry and cross with their own selves. There is no peace of mind in them. They don't want me any longer burning. So here I go and will never burn again. The son goes into the room and sees for himself whether all the candles are burning, but finds only 1 candle which is burning and the rest of them have extinguished. Why? You promised me. You promised me. You promised me. You will be with me till the end of the story. You betray me. Why? Son, why are you crying? I am the candle hope. I create a feeling of in everyone who is sad and depressed. Don't worry, child. I am there with you. You burn our candles with my help. Is it so? Yes. Will I be able to burn all the candles back again? Yes. Now I feel very happy. The candle of hope comes forward and assures the child that it is with the candle of hope that the child can recover all the other 3 candles. The candle of peace, the candle of love, and the candle of faith. The child feels elated and gets all the candles revived back again. Dad, all the 4 candles are burning brightly and now I feel very safe and happy, Dad. Always remember one thing, my son. With the candle of hope, you can get back love, peace, and faith. We now present to you
a song and dance performed by our students of Leo High School, Dil Hai Chhota Sa. छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।
Thank you, students. We now find that life has slowly come back to its normalcy. People have started moving out. Students have been going to schools. The parks have opened again. Things are slowly limping back to normalcy. And that has created an atmosphere of confidence, an atmosphere of assurance, and an atmosphere of faith in the small little children who were in between the four walls of the house during the lockdown. We have a dance by the students of Leo High School, Duniya Ka Nara, in which the technology and advancement which helped us during this difficult period in overcoming all the problems that we faced. We had online education to supplement the offline, which took part of a major share of education during those testing times. We had the vaccination which came in, which was indigenously produced by our own nation. We had PP kits, we had oxygen cylinders, we had beds made available. In fact, the period of corona or the pandemic had made us self-reliant, and we were in a position to overcome all the difficulties that the pandemic forced upon us. कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो ये वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदें पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा
We now have a song and dance by the students of Leh High School. Love You Zindagi. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love me कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल वे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you zindagi, love you zindagi, love you in the max. Yeah.
Thank you, students. Having undergone the trauma, the mental tension, the fear, the psyche, which was bogged down during the pandemic, now it is time for us to pray to God to give us the strength and the energy to overcome any crisis that may befall us. The students of grade 3 joined together along with the other students of our school to offer a little prayer to the Lord, asking for strength, asking for peace, and asking for help to overcome any difficulty that may befall us in the coming future. It is the hope which has helped us to stay afloat throughout the period. And that ray of hope has led us to feel that we do have the capacity and the strength to overcome all difficulties at any given point of time. This prayer will help us gain the strength from the Lord to overcome all the difficulties that we face, are going to face in the near future. Thank you. हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे We now come to the end of our annual program, and I'm sure each one of you must have enjoyed every bit of the program performed by our students. I sincerely wish each one of you and your family stay safe and follow all the guidelines and instructions given to you from time to time by the school authorities. I now declare the culmination of the annual program, and a big thank you to all the participants and the parents for the excellent cooperation that they had extended towards us to make this annual program a grand success. I now declare the annual program concluded. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra.